बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट 19 जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्स-रे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि एक्स-रे का मतलब है क्या। देखिए बच्चे, व्हाट इज़ एक्स-रे। एक्स-रे were discovered by a German scientist Röntgen in 1890 to 95. For the first time, since at that time he was totally unaware of its nature, properties and behavior, so he gave the name is a X-ray. These are also called Röntgen rays. X-ray of two types. अब एक्सरे का जो वर्ड्स है ये जर्मन लैंग्वेज में यूज़ होता है अननोन के लिए। अब कैरेस्टेटिक्स एक्सरे क्या है बच्चे, देखिए कैरेस्टेटिक्स एक्सरेज आर ऑलवेज discrete, such that does not contain the radiations of any wavelength or energy. Actually, the inertial transitions such that when electron in a bigger atom of a high atomic number jump from a higher to lower shell, they emit the radiation called charismatics X-ray. दूसरा बच्चे है कंटिन्यूस एक्स-रे। देखिए कैरेस्टेटिक एक्स-रे आर ऑलवेज डिस्क्रीट सच दैट डज नॉट कंटेन द रेडिएशंस ऑफ एनी वेवलेंथ और एनर्जी। सो टू गेट द एक्स-रे इन कंटिन्यूस फॉर्म हैविंग द फोटोन ऑफ ईच वेवलेंथ, a higher energetic radiation electron is pass through the vacuity of a heavy nucleus. As the electron come close to the nucleus, it is more and more attracted by the nucleus, which will decrease its kinetic energy more. This loss in kinetic energy of electron is ultimately appear as light photon called the continuous X-ray. अब बच्चे हम आते हैं प्रोडक्शंस ऑफ एक्स-रे पे कि एक्स-रे किस तरह बनते हैं। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक डायग्राम है। डायग्राम में हमारे पास ये टारगेट है। टारगेट के पीछे हमारे पास क्या है, कूलिंग रॉड है। ये है फिलामेंट और इसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो टारगेट से टकराने के बाद डायफ्रैक्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्स-रे। अब देखिए बच्चे, अ मॉडर्न एक्स-रे यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ फिलामेंट विच आल्सो सर्व एज अ कैथोड, इन evacuated metal or glass tube to accelerate the electron. Third number, a system to supply a high potential difference to accelerate the electron. Fourth number, a target usually of tungsten. यहाँ पे जो टारगेट है वो टंगस्टन है। टंगस्टन की रेजिस्टिव पावर बहुत ज़्यादा है। जो आमतौर पे बल्ब में भी स्प्रिंग हो यूज़ होता है, इसको भी हम टंगस्टन, ये भी टंगस्टन होता है। सो अ टारगेट यूजुअली ऑफ टंगस्टन टू सर्व इज ए नोड इन विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू प्रोड्यूस एक्स-रे। देखिए एक्सप्लेनेशन में बच्चे हम एक्सप्लेन करते हैं कि द फिलामेंट एफ एंड target T are sealed in the tube. A very high potential difference, 25 to 100 kilovolt, is applied between the filament and the target. Due to this potential difference, the electrons are accelerated. When these fast-moving electrons strike the target, the electron loss kinetic energy, which is converted into electromagnetic energy, as X-ray. These X-ray
spread out from the target and passes easily through glass tube walls. When electrons strike the target, some its energy converted into heat and the target becomes hot. So copper rod are connected to the target to conduct the heat away from the target. If the number of electrons hitting the target increase, the intensity of X-ray increases, so the quality or the energy of the X-ray increasing with the operating voltage of the tube. तो देखिए बच्चे यूजेस क्या है एक्सरे की. देखिए एक्सरे कैन नॉट पास थ्रू द फर्स्ट सर्जरी. देखिए द बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी and cast their shadow on the photographic, so X-ray are used to detect the fracture on bones, organ, etc. Second है industry. देखिए X-ray are used to detect the effects in radio valves, tennis ball, rubber tire, in the presence of pearl and the oyster. They used to test the quality of oil painting. Third number है engineering. देखिए X-ray are used to detect the cracks in the structure of metal in the body of aeroplane. They are also used to test the quality of welding. Research. X-ray are used in research department to study the structure of crystal, arrangement of atom, molecules and matter. Fifth number है detection department. X-ray are used commonly to detect the smuggling of precious metal and the custom post and contraband goods like a fume seal and parcel and leather cases. इसके बाद है बच्चे properties of X-ray. X-rays are electromagnetic radiation having frequency higher from ultraviolet but smaller from gamma rays. X-rays travel in straight line having velocity of light. Third number point है बच्ची देखिए X-rays are not detected by electric and magnetic field, so thus they have no charge. Electromagnetic waves. Fourth number interference and diffraction shows X-rays are electromagnetic waves. Fifth number, X-ray have very high penetrating power, so they can pass through many solid which opaque to ordinary light. X-ray can cause fluorescence and material such as zinc sulfate, barium, platinocyanide, tungsten, etc. X-ray affect the photographic plate. X-ray can cause ionization of gases, so X-ray liberate photoelectron on striking some metal, photoelectric effect. X-ray can produce damage in living tissue. So thank you students.